Okay. Now, this is a discussion that we will have, and where it is, and please don't mind, where you have to ask her that I want to get a tattoo done. ठीक है? And you will ask her that, okay, what tattoo should I get it done? And there's a conversation between both of you. Okay. ठीक है? So in reference, you can just use the tattoo that you have on your hand. Yeah. Okay? So that is just thing. तो आपके ऊपर, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, आप दोनों आपस में बात करेंगे, लेकिन हिंदी या इंग्लिश में नहीं बात करना, ठीक है? ना ही किसी तीसरे लैंग्वेज में, बट बात करना है, ठीक है? हाँ, इट कांट बी आ ओ नहीं, Nothing. हाँ, हबसा हुबा हिबी हा हु ही, ऐसा ये लाइन. नहीं, I didn't get that. So for example, hababa hiba hiha, hali haba ha, hadi habe haba, hula hipa saba, हाँ, ठीक है? So ऐसे लैंग्वेज में हम बात करेंगे, और फिर देन वी विल सी कि क्या हमारा डिस्कशन. ओके, it's a 4-minute activity. Can we talk in some simpler language because नहीं, ये सिंपल है ना, हिंदी में बात करना ना इंग्लिश में बात करना, सारा स्यापा ही खत्म. ना हिंदी ना इंग्लिश ना पंजाबी ना बंगाली ना उड़िया, कोई लैंग्वेज में बात नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है. ग्रामर इधर उधर हो जाए कुछ नहीं, कितना अच्छा, हमारे बच्चे तो कितने खुश हो जाएंगे, अच्छा ग्रामर भी भाई, ठीक है? सो वैसा. ओके, एंड द डिस्कशन इज दैट you are a tattoo artist. She has come to you and she has to get a tattoo done, and you have to suggest what the tattoo should be, or should you get a tattoo done or whatever. What? and all my queries to be put. Okay. Hello. आपको बोलना नहीं है, आप नहीं, पहले कुछ हेलो हेलो करके ना, यो जो भी है, अब आपके ऊपर है. अब मैंने छोड़ दिया, मेरा 4 मिनट 1 सेकंड There has to be sound or no sound. साउंड कंप्लीट साउंड एंड क्लैरिटी के साथ. Okay. How नहीं, अब ऐसे बात करते हैं हम. नहीं दिखाना. हाँ, मुझे खाना है क्योंकि भूख लगा, ऐसे तो नहीं बात करते ना. नहीं, पर टैटू बनाना है. हाँ, तो टैटू तो आप टैटू पार्लर में आए हो. अच्छा ठीक है. वो टैटू बनाती हैं. अच्छा ठीक है. तो आप नहीं तो किस लिए आएंगे वहाँ पर? अच्छा, I want to get it done. हाँ. Hareka ayara ukukasho ho. What is it? How big? अभी है 3 मिनट है और. हमेरा मारा ही शुभा काका. ओ काका का पुपू हाशरे भाषा हीपू. कहीं भी आपको अब मैं साउंड देता हूँ. अब क्या हो रहा है, वो खाली ह यूज कर रही है. अच्छा. आपके पास स, प और ल है. अच्छा, ओके. मतलब आप जब भी शुरू कर सकती है, स प ल से कुछ भी शुरू कर सकती है. So for example, Sudam Badum Palam Malalam. I can't actually my thoughts and my this weird language. I know. Okay, see, I'll tell you what. This is not the first time and the last time that we will be doing this exercise. So let's we have to just keep doing this. just Okay.
You'll be amazed आप एक महीने बाद इसमें क्या क्या कर रहे होगे. Okay. Samara paleta. Ho papapu. Nako. Uh, I can't think of it. It's just not happening. Can we talk normal first so that we can just No, at least no, understand no, what are we no, talking? no. Okay. It's getting difficult. Can I just see you talking first and then maybe I can, because Okay, no problem. it's not No problem. happening. No problem. She's doing it so comfortably. No problem. So maybe Christo! Are you done? हाँ हमने हाँ. ये किया So we'll just talk. Okay. We'll not use a language. We'll just use sounds. Okay. Surayata mama. हाँ अरे You just need to say any sounds, not a. हाँ How is hapa 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 hapa? ना Hero ba? ये जो है Saraya? अरे Ada. Kopa. हाँ होगा Kab. हाँ Tapi apa? हाँ गड़े ना Hiba. रा Unta berapa? उत्तर Hila. था So, so something. This is just a conversation that we had. Thanks. I'll just pass you by. Have you mailed it to me? हाँ या है मेल I'll that is connected. करिए हम भेज देंगे किसी को भेज देंगे इसमें हो रहा है शायद हाँ I think it's recording. या This have you mailed it or WhatsApp it to me? Just give me a second. और एक बार तब तक हम फिर से एक बार कर ले. Yeah. Let's see. Let's start. So, Saurabh, I was saying it's very difficult to stop myself, from talking in my normal language. Like, the first thing that comes in my mind is my normal So we'll thing. stop and just try and change that. उसको stop करना is very challenging. वो नहीं stop देख होगा. बता क्या
क्या होता है ना कि काफी बार ये बड़ा सिंपल है, हमारा इंस्टिंक्ट कुछ कहता है Right. बट हमें करना कुछ और रहता है, Sure, exactly. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो इन अ वे, मतलब आई वोंट गेट इनटू साइकोलॉजी ऑफ दिस एक्सरसाइज, आई जस्ट से दिस फन पार्ट ऑफ इट. इट इज वेरी सिंपल दैट अच्छा मैं कैसे अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करूं. सो वो है, दैट इज वन. सेकंड इज also understanding that how dialogues and lines can be said. So if I am convincing now, then when I get the words, और कितना इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये खाली हमारा वोकल्स पे इफेक्ट कर रहा है और किसी चीज पे इफेक्ट नहीं कर रहा है. लाइक जैसे मैंने रोका कि ये मत दिखाइए, इससे क्या हुआ कि आप वोकल पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेंगे. अभी आपको माइंड एंड साउंड दोनों को कनेक्ट करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल yoga or a meditation or this thing, they say that disconnect, okay, disconnect, whereas here we have to force the connection, we have to force the connection. So like for example, I'll tell you what, I don't meditate anymore. हाँ, बीच में मेडिटेशन करता था, वो सब था, but then you know what it started doing to me as a theatre person was that it started taking me away from things. What I started doing things reversely. I start thinking about that and I keep thinking about it. So I do a reverse meditation. So it is something like that. So you are thinking something and you are connecting with that message without the language. That is what we are trying to do. We are trying to convey a message without the language. How do I do that? And we have to doing it with sound. तो वही है, कोशिश करते हैं, मतलब राइट और रॉन्ग कुछ है नहीं. वही मैं बोला ना, आज तो पहली बार कर रहे हैं, फिर हम 2-3 बार और बाद में करेंगे, करते रहेंगे इस तरह की चीजें. Start. Hawa, hishu babawi keba. Saleta, saleta, pareta. Nana mama. Sanika, karasa. हाँ, now stop. Bhavna, is it easier now? Bit, yeah, a little bit. बताइए. I can, yeah. हाँ, so वही है. Because I have started thinking in this language only. Correct. I'm Now, thinking in Hindi and English. I now don't know. also listen to each other. You suddenly start getting more answers. ठीक है, when you start listening to her, now stop disconnecting from what I have to say, but connect to what the other person is saying and vice versa. Try and understand what this person is saying and similarly her what you are saying. ये अब आप ये करें. Let's do it. Habusi. Shaka, hishu baba boga. Sanita, sanita, karala. Aisha boga. Parika, Hishi bawa ka baba. parika कैसे? Parika, maraka. Aisha baga. Hishu baba boga. Again, I started thinking in Hindi or English. कोई बात नहीं. Okay. San san ka kar kar ka. Pashana ka heba. Hiju baba aluya. Kare sa par kara ka. Aisha bari. Kaba. Laka ka. Iba iya jana. अच्छा san san kar kar parisa. Abi jo kete jo zirana kaba. Oya chete. Ha ba. Satkari ka parika bata silaka. Ite tera padera. Iba iya uwa jaka.
And cut. Nice. दर्द होगा कोई cartoon होगा। Okay. Now अब मुझे बताइए कि आपको बाद में एक दूसरे का भाषा समझ में आने लग गया. हाँ, we were able to connect. पूरा आ गया। So now do we get the concept that I told in the first or the second day, I don't remember whenever, but that it's the sound that carries the message. It's not the language. Right. True. Okay, so this is a small example. Okay, and slowly and steadily when we keep on doing more and more things, तो जो जैसे कल भी मैंने बोला क्लस्टर्स में जब हम लोग करते हैं तो होता क्या है आगे चल के, तो उसी अब हम एक छोटा सा एग्जांपल सुने. So what we recorded is what we will listen to. जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप खोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम डोले, आज भी आलोक को डोले, घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाशपत पर जिंदा छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये पूछ बेदल ओस नीले, तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना. What is the drink with the April sun? Squeezed like an orange in my glass. I sip the fire, I drink and drink again. I am drunk, yes, but on the gold of suns, what noble venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter. My worries lose. Wee bubbles ring my glass like a bride's nervous smile and meet my lips. Dear, forget this moment's lull in wanting you, the blur in memory. How brief the term of my devotion, how brief your reign, when I with glass in hand drink, drink, and drink again this juice of April suns. जाग तुझको दूर जाना, चिर सकजक आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल बेदल ओस गीले, तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना.
the April sun, squeezed like an orange in my glass. I sip the fire, I drink and drink again. I am drunk. Yes. But on the gold of suns, what noble venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter. My worries doze. Wee bubbles ring my glass like a bride's nervous smile and meet my lips. Dear, forgive this moment's lull in wanting you, the blur in memory. How brief the term of my devotion, how brief your reign when I, with glass in hand, drink, drink, and drink again this juice of April suns. मैं फिर से सुनाता हूँ दोनों के ऊपर काफी रेफरेंसेस चल रहे थे हाँ The second one. फर्स्ट और सेकंड फिर से सुनाता हूँ जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कम फूले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित क्यों रोले, आज भी आलोक को डोले की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाशवत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या ये मोम के बंधन सटीले, पथ की बाधा बनेंगे, तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की, क्या दुआ देंगे तुझे ये फूल, दे दल ओस गीले, तू ना अपनी छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना, चिर सकजक आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाशवत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल, बेदल ओस गीले, तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना।
हमने सुना, क्या हमें फर्स्ट और सेकंड में कुछ डिफरेंस पता चला? था डिफरेंस? अच्छा, आपको क्या डिफरेंस लगा? मोटा मोटा इतना टेक्निकल मतलब मुझे ये लगा कि ज्यादा इमोशंस थे और वॉइस में वेरिएशंस ज्यादा थे। मतलब पहले वाला वाज मोर प्लेन रीडिंग एंड दिस वन वाज विद वेरिएशंस। ठीक है, अब हम आपका फिर से सुनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपना आवाज ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप बताओ I just सर। hate my voice. है क्या? आवाज की सुनती तो मन करता है काम बंद कर लूं। अरे ऐसा नहीं है, क्या आप बात कर रहे हो? ये ऐसा कला है कि सबसे, अगर हम क्या बोलूं? जाग तुझको दूर जाना। What is this drink with the April sun? Squeezed like an orange in my glass? I sip the fire, I drink and drink again. I am drunk, yes, but on the gold of suns, what noble venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter? My worries doze. Wee bubbles ring my glass like a bride's nervous smile and meet my lips. Dear, forgive this moment's lull in wanting you, the blur in memory. How brief the term of my devotion, how brief your reign, when I, with glass in hand, drink, drink, and drink again this juice of April suns. जाग तुझको What is this drink with the April sun? Squeezed like an orange in my glass? I sip the fire, I drink and drink again. I am drunk, yes, but on the gold of suns, what noble venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter? My worries doze. Wee bubbles ring my glass like a bride's nervous smile and meet my lips. Dear, forgive this moment's lull in wanting you, the blur in memory. How brief the term of my devotion, how brief your reign when I, with glass in hand, drink, drink, and drink again this juice of April suns. तो डिफरेंस पता चला पहले और दूसरे में? सेकंड में I more felt effort like- was good. But I felt in second, I sounded like I was talking to myself rather than I'm talking to someone else. In first one, I was clearly just trying to convey things, and in second one, I think I was just First one was better. for me it was For better. you, the first one was Because I better. was trying to convey something, and second I was just Second में you talking became to conscious myself. and then Yeah, think and the I could first one actually was- hear myself breathing heavily because I was a little nervous for sure. That's what. So you know what happened in the second time? Second time, your imagination got mixed up. So if I have to, so if I have to just say, you know, from that angle, in terms of what
So, so tell me something. In the second time, were you able to see something or things were blurred? Mostly blurred. Mostly, I was like, I'm I got lost it. I got in it. my own I got thoughts it. I and got it. just saying. And second time आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही थी? Were things visible? Hmm. Okay. So I'll tell you what. Because you were forced visualization second time, you started visualizing something. What happens a lot of times is that suddenly at one point of time you start relating to certain words and there you get mixed up. Yes. So what happened is that after you read, huh, after you took those sips, I'll be sending these across to you guys so that you can have a record of it. After you, so मैं फिर से चला था, फिर से सुनो, हाँ, मतलब मैं भी सुना. so so once this अरे ये टेक्नोलॉजी क्यों चलो भेज देना फिर घर में सुनेंगे, कुछ और सिखा दो आप. चाक तुझको एक्शन चाक तुझको दूर जाना. What is this thing with the acrid sun? Squeeze like an orange in my glass. I sip the fire, I drink and drink again. ध्यान से सुनो. I am drunk. Yes. But on the gold of suns, what noble venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter. My worries doze. Three bubbles ring my glass like a bride's nervous smile. So do we suddenly see a change in pace after the line of I am drunk? Okay. So that is where the visualization got lost. Right. Okay. And that is where a certain confused and blurry image started happening. Because of it change हो गया pace. फिर आपको नर्वस हो गया, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आपको कुछ समझ नहीं आने लगे. So वो होने लगा. So which was sounding this thing, but still there was a certain visualization that was it. So what I'm trying to say is that what is the difference between the reading and when we are narrating. So a simple thing, जैसे रमन जी आप हमेशा पूछती हैं कि अच्छा इमोशन डालना है, इमोशन डालना है, इमोशन डालना है. इमोशन डाला नहीं जाता, इमोशन डल जाता है. ठीक है. So that's why, like first time I said you are forcing emotions. Correct. Why are you forcing emotions? Okay, when we added a little bit of visualization, then things, so she said, I could see more emotions in your second this thing. Whereas it was simply told to you that no emotion is needed. आप बिना जाने आपने इमोशन उस पर डाला. Yeah, there was no effort. ठीक है. I और just visualized that तिमिर है और तो अंधेरा वो है, विजुअल जलते तो जा अपने रहे आप हैं. निकलता वो. ठीक है. Okay, it is only when we understand that okay fine, what is happening, we'll be able to. नहीं तो वो forced dramatizations हो जाती हैं सारी चीजें. जी. ठीक है. वो फिर रामलीला हो जाता है कि रावण को हंसना है तो हंस ही रहे. जी. क्यों क्यों हंस रहे हो तुम? वही रावण वो हंसना है, हंस रहा. ठीक है. खासा हंस रहे. Anyway, what we are going to do now is we are going to take this one step forward. अभी तक हमने clusters किए, right? Now within the clusters, we have to identify one word, which you think is important according to you. So I'll just give you your respective. अगर आप वहाँ comfortable है तो वहाँ या यहाँ जहाँ भी मर्जी आप कर सकते हैं. नहीं तो I can just hand over the
उसकी। तो इसमें जो हमारे क्लस्टर्स हैं, इन द क्लस्टर वी हैव टू आइडेंटिफाई वन वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। तो उसके ऊपर बस एक छोटा सा डॉट या स्टार मार। in every single हाँ, cluster. पहला पहला 4 लाइन पे आप करेंगे, फिर मैं बताता हूँ क्या। चल रहा है ना? हाँ जी, बताएं। So, in first line, what is this drink? Drink. But the Drink. April sun, I guess sun. Sun. Squeezed like an orange in my glass, so it's squeezed and orange. I think. नहीं, एक ही वर्ड चाहिए, एक क्लस्टर में एक वर्ड। Okay. I think it's squeezed. Squeezed, okay. And I sip the fire on fire. Fire, ठीक है, okay. हाँ, अब आपका टर्न। चिर सजग आंखें उनींदी, उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, वर्ड कौन सा? व्यस्त, व्यस्त। जाग तुझको दूर जाना, दूर, अचल हिमगिरी के हृदय में अचल, अच्छा, आज चाहे कम भोले कम, कम, या प्रलय के आंसुओं में आंसू, मौन अलसित व्योम रोले रो, आज पी आलोक को डोले डोले, डोले, तिमिर की घोर छाया घोर, जाग या विद्युत शिखाओं में, विद्युत निठुर तूफान बोले बोले, पर तुझे है नाश पथ पर। बोले के पहले विद्युत वाला लाइन एक बार मुझे बताएंगे? जाग या विद्युत शिखाओं में, निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर, तुझे चिन्ह अपने छोड़ जाना छोड़, जाग तुझको दूर जाना जाग। ठीक है, ओके। सो ये जो हमने किया ना, ये सिंपल सा है। फंडा पहला यही है कि एक क्लस्टर में एक ही वर्ड है जिसके ऊपर हम स्ट्रेस देंगे, ठीक है। पहला तो अभी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कहा आप चूज करें। हाँ, अब इसमें क्या होता है काफी बार कि डायरेक्टर बोलता है कि अच्छा मुझे स्ट्रेस किस चीज पे चाहिए। तो आगे चल के क्या होगा ना कि जब भी आप लोगों को स्क्रिप्ट्स मिला करेंगे, चीजें मिला करेंगे, उसमें ये समझना होगा कि अच्छा हम इसमें कहना क्या, मतलब ठीक है, मतलब मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। इट्स लाइक कि अच्छा डू आई वांट देम मूव्ड, मुझे कोई एक्शन चाहिए क्या उसमें। अगर मुझे एक्शन चाहिए तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे हैव इन अ वे, शी हैज इन अ वे पिक्ड अप एक्शन वर्ड्स, जाना, छोड़ना, ये रोना, ठीक है। तो इन्होंने एक्शन वर्ड्स ये किया। अब अगर इन्होंने एक्शन वर्ड्स किया है देन ऑल थ्रू आउट, जैसे जहां पर मैंने अचानक बोला उसके पहले वाला लाइन क्या था, विद्युत तो शिखाओं में। तो आपने वहां पर कोई एक्शन वर्ड था उस वाले नहीं। का एक्शन था वर्ड नहीं नहीं। उठाया, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो जाता है कि जब ऐसा होता है, एंड टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलेशंस एंड डायलॉग डिलीवरी, उसमें Okay. था एक जाग। सो उसमें जाग था, करेक्ट, मैं वही बोलने वाला था कि अब अगर जब हम लोग ये क्लस्टर करते हैं ना, अब अगर आप देखें
तो मैंने तो आपको ऐसे ही बोला कि 4 वर्ड 5 वर्ड 6 वर्ड पे ही लेके चलो। तो जब भी कुछ लिखा जाता है, आप लोगों को पोएट्री दिया गया, prose is different. So when we get in a next session and when we are getting reading material of a story or a script, then it will be different. But यहाँ पर हम 4 में बात करते हैं, 4 में बात करते हैं, यूजुअली रूल नॉर्मली हाँ कोई बात नहीं। उस एक क्लस्टर में एक वर्ड होता है जिसके ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल स्क्वीज्ड, सन, इट कैन बी नाउन, इट कैन बी वर्ब, इट कैन बी दिस थिंग. तो थोड़ा सा व्याकरण आ जाता है इसमें, थोड़ा सा ग्रामर हो जाता है इसमें, लेकिन दैट इज व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल इज. पर जनरली हम एडजेक्टिव्स पे देते हैं. हम किसी पे भी दे सकते हैं, अच्छा. हम किसी पे भी दे सकते हैं. ओके, नाउ इफ आई हैव टू पिक अप समथिंग लाइक दिस, अगर आप एक बार मुझे अपना रीडिंग मटेरियल दे दें. हाँ, तो सो दिस, इफ आई एम डूइंग इट, I will look at my audience, right? My audience right now, for example, is Bhavna, which I assume कि आप महादेवी वर्मा की बुक को नहीं पढ़ती होंगी, हाँ. तो मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है? और मुझे ये पता है दिस इज नॉट अ डेली लैंग्वेज ऑल्सो. हम आज के डेट में ये नहीं बोलते कि हम व्यस्त हैं, हम बोलते हैं हम बिजी हैं. हाँ, या अभी टाइम नहीं है. अब आप जैसे, हाँ, अचल हिमगिरी के हृदय में, हम अब नहीं बोलते कि हृदय में कुछ हो रहा है, यार सीने में कुछ हो रहा है, या दिल में कुछ हो रहा है, या एक बड़ा सा वैसा हो रहा है. तो हम ना बोलते हृदय के आसपास ना बड़ा कंपन सा महसूस हो रहा है. इतना देर बोलते बोलते तो हार्ट अटैक आ जाएगा खुद ही, ठीक है? सो हाँ, दिल घबरा रहा है, हम सीधा बोलते हैं दिल घबरा रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. बेस्ट इज हम तो बोलते ही हम कुछ हाथ में ना, बस एंड वी लीव इट. जो मैं पहले दिन बोल रहा था यार हम हाथ और वो क्यों यूज करते. सो नाउ वी टॉक्ड अबाउट ऑडियंस आल्सो. अगर आपको पहला वीकेंड याद हो, हम बोले कि मेरा ऑडियंस कहाँ बैठा हुआ है, मुझे अपना आवाज वहां तक पहुंचाना है. आज हम ये ऐड कर रहे हैं कि आवाज तो पहुंचाना ही है, हमें मतलब भी पहुंचाना है. So what I do is, because let's say your audience is me, Bhavna, मतलब Bhavna, me, let's say Siddharth, Mohit, Christo, who don't know Mahadevi Verma, who will take time in understanding व्यस्त. मतलब वो पूरा जो हम जो बोल रहे थे ना, पूरा साउंड क्लियर होना चाहिए. व्यस्त, नहीं तो मैं बड़ा व्यस्त हूँ, मतलब मैं बड़ा व्यस्त हूँ, व्यस्त व्यस्त कैसे निकल रहा है, क्या बोला उसको, कितना बिजी होगा. वर्सेस मैं बड़ा व्यस्त हूँ, क्या हो गया, अरे वो बड़ा व्यस्त है. दैट इज द रिस्पॉन्स दैट विल कम. क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी दैट हैज कम. नहीं तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, मतलब क्या है, वो बिजी है यार, ठीक है? सो इफ आई एम लुकिंग एट अ थ्री वे कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल. just experiment with this, anybody. So I will read, or I will put stress on these words. So for example, हाँ, चिर सजग आंखें उनिंदी, आपने उनिंदी भी की, लेकिन इसमें चारों वर्ड जो है ये हमारा डेली बोलचाल की भाषा में नहीं है. तो हाउ डू आई डू दिस, व्हाट डू आई कीप माई मीटर एज, उसको मतलब मीटरिंग कहता हूँ मैं हल्का सा. So what do I keep my meter as? I keep my meter चिर सजग, में खत्म हो रहा है. हाँ, चिर सजग, चिर सजग आंखें उनींदी, हाँ, चिर सजग आंखें उनींदी. तो सामने में अच्छा सजग आंखें उनींदी, मैं वहां से मैं ग्रिप ले लिया. So why do we put stress? We put stress for two reasons. Either it has a logical thing in the story. So because we are doing poetry, हम इसीलिए जब हम कहानियों पे आ रहे होंगे ना, तो उसमें आ जाता है काफी, स्पेशली सस्पेंस या सस्पेंस और कॉमेडी में बहुत आता है, जहाँ पर टाइमिंग के ऊपर सब कुछ होता है. That what word am I using and what significance it has in the entire story. And that is true with all our conversations. हाँ, मुझसे बात मत कर, क्या, मुझसे बात मत कर, मुझसे बात मत कर. क्यों? बहुत गुस्सा हूं. Later on when we study emotions, then we can add this extra bit from our own end.
हाउ डू वी ऐड दोस? बट क्या है, मुझे उसको बोलना है कि बात नहीं करना क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बट व्हाट इज द मैसेज दैट आई एम ट्राइंग टू से?